कारोबारी हफ्ते के पहले दिन ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान है। इस वक्त भी 900 पॉइंट्स की कमी देखी जा रही है। सुबह से लेकर अब तक ट्रेडिंग के दौरान 1500 पॉइंट्स की मंदी हो चुकी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का पहला रोज है। स्टॉक मार्केट में कारोबार 800 पॉइंट्स की गिरावट से शुरू हुआ है। स्टॉक मार्केट में दौरान ट्रेडिंग 1500 पॉइंट्स की मंदी देखी गई है। स्टॉक मार्केट में 1,70,000 पॉइंट्स की हद गिरकर बहाल हुई और 100 इंडेक्स 900 पॉइंट्स गिरकर अब 1,70,000 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का ये पहला रोज है और ये हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में कारोबार 800 पॉइंट्स की गिरावट से शुरू हुआ। स्टॉक मार्केट में दौरान ट्रेडिंग 1500 पॉइंट्स की मंदी देखी गई। स्टॉक मार्केट में 1,70,000 पॉइंट्स की हद गिरकर बहाल हुई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से हम आपको बता रहे हैं, कारोबारी हफ्ते के पहले दिन ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान रहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबाई काबीना का इजलास आज तलब कर लिया है। 135 नुकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। उस्मान अलीम से मजीद जान लेते हैं। जी उस्मान, बताइए एजेंडे में क्या क्या शामिल है? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबाई काबीना का इजलास आज तलब किया है, जिसमें 135 नुकाती एजेंडा शामिल है, जिसमें ट्रैफिक कंट्रोल की बेहतरी के लिए प्रोविंशियल ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड कमांड सेंटर के क़याम की मंजूरी ली जाएगी। कायदे आज़म बिजनेस पार्क शेखुपुरा की तोसी के लिए मजीद 200 एकड़ अराजी की फराहमी का एजेंडा पेश किया जाएगा, जबकि पंजाब जनरल इंश्योरेंस कंपनी के क़याम की भी मंजूरी ली जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम जो है वो मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। पंजाब में न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी की भी मंजूरी ली जाएगी, जबकि पंजाब में एक्वा कल्चर अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी का एजेंडा भी पेश किया जाएगा। 150 सीसी मोटरसाइकिलों की ट्रांसफर फीस माफ करने की मंजूरी का एजेंडा पेश होगा, जबकि बाइकर्स और किसानों के लिए टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी की मंजूरी का एजेंडा भी पेश किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका उस्मान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। कैपिटल स्मार्ट सिटी मंसूबे पर पेशरफ का जायजा लिया। सेफ सिटी फेज 2 मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स में इजलास की सदारत की। हेडक्वार्टर्स की तज़ीन व आराइश और अपग्रेडेशन के काम का मुआयना किया। उन्हें फ्यूजन सेंटर और जदीद कंट्रोल रूम के क़याम से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने हिदायत की कि कंट्रोल रूम को जदीद टेक्नोलॉजी और तकाज़ों से हम आहंग किया जाए। कहा सेफ सिटी के तहत तमाम मुतालिका इदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा, जिससे शहरियों को महफूज और पुरसुकून माहौल फराहम करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की 7 करोड़ रुपए वापस लेने के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई है। लाहौर हाईकोर्ट ने चौधरी शुगर मिल्स केस में बतौर गारंटी जमा कराए गए 7 करोड़ रुपए वापस करने की हिदायत कर दी है। अरशद अली से मजीद जान लेते हैं। जी अरशद, बताइए तफसीलात। जी फवाद, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की दरख्वास्त पर जो है वो समाअत की। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम की सरबराही पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने इस दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की 7 करोड़ रुपए वापस करने की जो दरख्वास्त थी उसको मंजूर कर लिया है और डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के 7 करोड़ रुपए वापस करने की हदायत कर दी है। और दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि चौधरी शुगर मिल में 7 करोड़ रुपया बतौर गारंटी जमा करवाए हैं। नैब ने चौधरी शुगर मिल केस खत्म कर दिया है। अदालत हाई कोर्ट में जमा होने वाली रकम 7 करोड़ रुपया वापस करने के अहकामात जारी करे, जिस पर जो है वो वफाकी हुकूमत की जानब से असिस्टेंट डिप्टी अटॉर्नी जनरल रफाकत डोगर और प्रोसिक्यूटर फातिमा शाहिद जो है वो पेश हुई थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अरशद अली। कराची में पुलिस ने ईद से कबल मार्केट में जाली करेंसी फैलाने की कोशिश नाकाम बना दी है। 3 मुल्जिमान को कर लिया गया है गिरफ्तार। 5,000 रुपए का जाली नोट 1,000 रुपए में फरोख्त किया जा रहा था। तफसीलात जानेंगे, काजी हसन हमारे साथ मौजूद हैं। काजी साहब, बताइएगा कि कब से ये लोग जाली करेंसी फैला रहे थे मार्केट के अंदर और जालसाज तो अब धर लिए गए हैं? जी बिल्कुल, ये अल्फला के शोबे तफ्तीश है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस है, उसने एक खुफिया इत्तला पे कार्रवाई करके एक गिरोह को 3 मुल्जिमान से गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 5,000 रुपए के जाली नोट बरामद हुए। और पुलिस का ये बताना है कि 5,000 के जाली नोट जो है वो 1,000 रुपए में फरोख्त करने का इरादा था इनका। और इनका ये प्लान था कि ये ईद से कबल ये मार्केट में जाली नोट फैलाते, क्योंकि ईद के दिनों में, खासकर बकरीद के दिनों में वो नोट ये फैलाते और वो आसानी से ये। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका काजी साहब। मैं गुजारिश ये करूँगा, अगर आज सवाल सिर्फ पोलियो के ऊपर किया जाए,
अच्छा सर, ये बता दीजिए पोलियो बूस्टर के हवाले से दीगर कितने ममालिक में जो है इसे इस्तेमाल किया जा रहा है या सिर्फ पाकिस्तान में ही इसे इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके हवाले से ज़रा बता दीजिए। ये जितनी भी टेक्नोलॉजी है ये पाकिस्तान के लिए मुनफरिद नहीं है, ये दुनिया भर में इस्तेमाल की गई है। मैं हमेशा सोचता था कि बड़ों को ये वैक्सीन नहीं दी जाती है। मुझे जब मैं इनके साथ बैठा इन्होंने बताया तो ऐसे दुनिया के चंद ममालिक हैं जहाँ पे उनकी हुकूमत ने फैसला किया कि पूरी कौम को हम ऑल एज हर उम्र के लोग जो हैं उनको हम ये वैक्सीन देंगे। नमीबिया वो मुल्क है और नमीबिया कामयाब हुआ, यही दोस्त थे जिन्होंने उस कैंपेन को बनाने में, उसको स्ट्रेटजाइज करने में वहाँ की हुकूमत का साथ दिया था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह नमीबिया जो है वो पोलियो फ्री हो चुका है, क्योंकि reason this room with a beautiful view ends up in having successful mediations. So a nice environment is very important. Also, what is very important is Rahim Saab said that in the United Kingdom there are not many mediators. Well, that is not the trouble in Pakistan. In Pakistan, we have a number of mediators, and these are experts in different fields. When being responsible for choosing lawyers to be trained as mediators, I had to bear in mind that they had to represent the entire spectrum of law, ranging from banking law, service laws, civil disputes, land disputes, and so on and so forth. But these mediators need to be referred more cases than they have at their hands. They are ready to do that. For that, the courts have to be willing to refer cases to mediation and must never think that by doing so, they are shying away from their primary responsibility of adjudication. Yes, you have to hold your nose while sitting as a judge in telling parties to mediate and give them a brief as to the benefits of mediation. Parties are reluctant, having paid lawyers, to pay fees for the mediators. I'm happy to know that some of the mediation centers have a policy to have pro bono mediations. And in order to encourage parties to go into mediation, what we have decided now is to train as many judges as mediators, and also the officials in the High Court and the Supreme Court who are law graduates, who will be willing to conduct mediation in their own pay scales. In the Supreme Court, we already have had 2 gentlemen trained as mediators. They are now accredited from the research cell. There is a training program being started by the Ministry of Law on Monday. 2 more are going to be trained. And by the end of this year, I hope to take the number to at least a dozen, so that parties who cannot afford to pay for the mediators are referred to the mediation center, which will be housed in the Supreme Court free of cost, for mediation to be conducted free of cost. I remember when Ms. Sara Tarod was appointed as a mediator, and she successfully mediated a case which went on for years on end. And then there was another case when we wanted to appoint a mediator, and my Chief Justice said, why not appoint her again? I said, no, sir, and I'm sorry for that. I said, no, sir, if you're going to appoint her, you will have to pay her. You cannot be expecting mediators to work pro bono. Yes, they can do it once, they can do it twice, but not in every other case. Because mediation, I tell you, is also a very lucrative part of the profession. When you will see that when cases are referred, commercial cases will be referred. And in the commercial cases, there is a very high stakes for the mediator. Abroad, especially in Singapore, there is a certain percentage of the settlement amount that is set aside for the mediator's payment. This will happen in Pakistan, and I'm very confident that it will. But we are at the nascent stage. Do remember, our journey has started in 2022. In Turkey, it started in the year 2013, and by 2022, they had 3 million cases decided through a process of mediation. 3 million is a lot. When asked this time, last week, that what is the number, they said it is 9 million.
9 million is a staggering figure to decide through a process of mediation. In Pakistan, the total number of cases, including in the Supreme Court and the High Court, is 1.82 million. That is a very large number for the number of judges that we have to humanly cater for. So therefore, the alternative dispute resolution mechanisms have to be adopted to address this issue. Before leaving the rostrum, there is one other aspect that needs to be discussed, which is the talk of mandatory mediation. We have to be very careful about it. There is a draft bill that I have had the sight of, prepared by the Ministry of Law, which has the effect of including Section 3A in our Alternative Dispute Resolution Act of 2017. And that schedule will list the laws or the types of cases that have to be mandatorily referred to mediation. We have to bear in mind that there are certain laws, like for example, the rent restriction ordinances, for example, family laws, for example, suits on negotiable instruments, and so on and so forth, which require the courts to resolve them expeditiously. By making referrals of these disputes to mediation can have a counterproductive effect. It may take longer than it would have taken for the courts to decide. So we have to be very careful that mediation, instead of becoming a time-saving device, does not become a time-consuming device. But yes, the experiment of mandatory mediation can start off with fewer laws, because we do have a large number of accredited mediators as lawyers and in different other professions, but the number is not so large to deal with mandatory mediation. So this is something over which I would like to caution the Ministry of Law, that if you intend making a list, please do not make it very long, and do not make it such that has the effect of mediation becoming a time-consuming device. Thank you so much.